159 days left for placements. Time is passing by so quickly, man. Like 20 days, 21 days passed. And I have to make. I kind of got stuck in the progress. I woke up early today. That was a win. But I didn't study for 2 hours and I was stuck in an overthinking loop from 7 to 9 of just not knowing if I'm living my life right and questioning everything, if my priorities are right, if I'm actually utilizing my time to live a good life, whatever that means. And that is something I have to figure out. But you sometimes have an intuition about what a good life might constitute for you. So, yeah, I'm like, because yesterday I was talking to my friends about movies and series and how I felt like I'm almost behind in every mainstream genre of things, of experiencing life, of experiencing this phase of my life from 18 to 22, let's say, of college life, what people do in college. I feel like I've missed out on so much. Whether that be binging on series and movies, because I never really gave myself the permission to binge a very huge or large series like Game of Thrones or any other thriller series, because I know myself, I'm obsessive and I might have the instinct to watch it and abandon everything else. And I never really thought I had the time for that. I was like, I have to figure things out. I have to I have my curiosities. I have to read books. I have to do something productive. Yeah, that wasn't pressure. And now I stand at the cusp of my climax of my degree. That is like placements. I have 6 months on placement. So I'm also saying the same thing to myself, that I do not have the time. But then I've questioned myself, when will I ever have the time then? Like, and will I ever have the time then? कि बिकॉज अभी 6 मंथ्स प्लेसमेंट्स, उसके बाद पूरा साल प्लेसमेंट्स में जाएगा, अगर कब लगी कब नहीं लगी पता नहीं, वो तो और प्रेशर रहेगा। उसके बाद जैसी लगी, मन की नहीं लगी, तो फिर वो ओह नई जॉब में ग्राइंड। तो परमिट तो कभी कर ही नहीं पाया मैं खुद को एंजॉय करके लेजर एक्टिविटीज़ के लिए। तो दैट एंड तो जनरल सेंस में फोमो, आई वाज टॉकिंग टू जीपीटी अबाउट इफ माय लाइफ डिसीजंस आर राइट, इफ आई एम ऑन द राइट पाथ, वेदर दैट बी बिकॉज आई फील बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, वेदर दैट बी in terms of covering mainstream media or shows and movies, or social life, or having fun, or going out, or a romantic life, a dating life. I feel because in all these things, like, I mean, you're bombarded about information from other people's life, the highlights of their life so much. Everyone who I talk to is asking me about, oh, do you have a girl in your life, or like, is there something going on, or people are like, why do you do something and shit like that. And then I feel like, fuck, why am I living my life wrong? What is there something wrong with me? But also it's mostly like a demographic issue, but not to go into the specifics of that. But again, these things question at like these things take a hit at my clarity. Like, although I think if I sit with myself for a longer duration, I would be able to clear all this clutter out and decide for myself. बट या पूरा नेल ऑन द कॉफिन हो नहीं पाता कि सर्टेनली कि सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस आई लर्न अ फ्यू थिंग्स कि इवेंचुअली मैं अगर अपने मेन सेंट्रिक गोल ऑफ लाइफ पे काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं संतुष्ट नहीं फील करूँगा। मेरे को वो प्लेजर मज़ा ही नहीं आएगा। मेरे को वो पता है, वो एक एस्केप, एक नम्बनेस देगा कुछ समय के लिए, बट इन रेट्रोस्पेक्ट आई विल नॉट लाइक दैट द टाइम दैट इज स्पेंड। आई विल डिसलाइक कि भाई कुछ कर लेता, जो मैं सोचा था वो कर लेता, जिस काम के लिए मैंने खुद को ये साल दिए थे या कुछ टाइम दिया था, कुछ डेडलाइन दी थी, वो कर लेता तो बेटर फील होता। तो वो एक कंटिन्यूस सेंस ऑफ एंजाइटी, आई कैन नॉट लेट माई सेल्फ बी कम्प्लीटली फ्री इफ आई एम डूइंग समथिंग विदाउट, इफ आई एम टेकिंग डूइंग लेजर एक्टिविटी विदाउट डिसाइडिंग। इफ आई डिसाइडेड कि कुछ काम का करूँगा और उस समय मैंने मूवी देखने बैठ गया, तो फिर वो शायद देख रहा हूँ और इंगेजिंग है, तो मैं वही ऑब्सेसिव वाले बात में छोड़ भी नहीं पाता। बट बैक ऑफ द माइंड लाइक वो वुड पैकर की तरह समथिंग इज बगिंग मी, गलत कर रहा, गलत कर रहा, गलत टाइम वेस्ट कर रहा, गिल्ट गिल्ट गिल्ट। तो या दैट वाज इट। एंड सो आई डिसाइड, मतलब इस जीपीटी वगैरह से बातचीत करते मैं कुछ अपने पैटर्न स्पॉट कर पाता हूँ, कुछ अपने फ्लॉज, अपने लॉजिक थिंकिंग में लॉजिकल फ्लॉज और लूप होल्स स्पॉट कर पाता हूँ, ताकि मैं उसे क्लियर आउट कर पाऊँ। तो मैं वो चीज़ से रियलाइज़ करा कि आप पूरी तरह कभी भी कम्प्लीटली कॉट अप नहीं हो सकते पॉप कल्चर, मीडिया, इन सब चीज़ों से। और फोमो में देखना, प्रेशर में आके देखना, तो आपको एन्जॉयमेंट लेगा ही। मैंने जैसे नारुतो देखा था, एंड मैंने स्टार्टिंग में, मैं नारुतो 1 डेढ़ साल लगाया देखने में, और मैंने जब खुद से देख रहा था ना कि अच्छा एक आर्क देख ली, फिर रुक गया, एक्सक्यूज मी, तब सही चल रहा था। लास्ट में फिनिश करने पे आ गया, लाइक लेट्स फकिंग गेट डन विद दिस। लास्ट की तो बहुत अच्छी आर्क है, मुझे मज़ा आई, बट वो लास्ट के बहुत सारे एपिसोड में मतलब रश में देखने लगा, तो उतना इन्जॉय नहीं कर पाया मैं। तो रियलाइज़ किया यार, ये अगर चीज़ जल्दी जल्दी करूँगा ना, तो फिर मैं, मेरे को लगेगा कि
मतलब कुछ आई वेंट टू थॉट, कुछ मैं सोचने लगा था, इस चक्कर में जोन्ड आउट, आई फॉरगॉट व्हाट आई वाज सेइंग। हाँ, लास्ट में एंजॉय नहीं कर पाया बिकॉज आई रशिंग था। आई रियलाइज कि यार ये तो पॉइंट ही नहीं है। फिर आई वेंट इन कंप्लीट आर्गुमेंट विद जीपीटी, वैसे वेरी फ्यूरियस आर्गुमेंट हो गया। वो मुझे बोल रहा है कि स्पॉइलर से कुछ नहीं होता। मैं चिल्ला रहा हूँ, भाई ऐसे कैसे नहीं होता, स्पॉइलर से होता है भाई, ऐसे तो ऑप्टिमम एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग समथिंग। ये आई रियलाइज ही टोल्ड मी ब्रूटली कि you are too obsessed with perfectionism that you don't won't let go of reality, and you would torture yourself and with over skewed expectations or unrealistic ones. And I'm still not over what the fact what he said, but I really realized कि yeah, चाहे ऑप्टिमल चीज़ कुछ और हो, बट इवेंचुअली रियलिस्टिक वही है जो आपके सामने है, जो आपके हाथ में है, जो आपकी झोली में है। तो उसे एक्सेप्ट करो या रोते रहो। और हो सकता है मेरे अंदर का इंस्टिंक्ट एक ढीठ बच्चा कहना चाहे कि रोते रहो, बट इवेंचुअली आई हैव टू रियलाइज़ कि भाई टू मेक द बेस्ट ऑफ वॉट आई हैव गॉट इवेंचुअली। बट हाँ, these things I've realized, and these things take a hit at my momentum at times कि यार मैं कुछ सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ जीवन में, मैं सही बात पे जा रहा हूँ। What is happiness? What the fuck is a good life? How do I find happiness in my life? How do I find peace in my life? How do I find contentment? How do I not let it be so fragile that it gets affected by, that I get angered by a spoiler of a fucking movie, because now that is movie is spoiled and I cannot won't have the most optimal experience watching it. So I think I'll have to learn to deal with these, uh, let's say, not so good tendencies of mine, of questioning myself, of perfectionism, of having unrealistic expectations. Because I thought I'd started to think I should cover everything of spoiler worthy, because otherwise people would keep giving me spoilers and that would ruin my experience. But also I realized कि ऐसे रश करके देखने में और वो फन खराब ही होगा, प्लस स्पॉयलर्स सुन के भी भूल जाते हो आप काफ़ी सारे। और मतलब वही एक्सपीरियंस वाली बात होती है कि आप जब खुद इमर्स होकर वो चीज़ देखोगे तो ज़्यादा इन्जॉय करोगे रादर देन रशिंग इट। और चाहे पता भी हो कुछ होने वाला तो भी इट्स ओके। पता नहीं यार, अभी पूरी तरह कुछ चीज़ों में श्योर नहीं हो पाया। मैं थिंक मुझे चीज़ें पढ़ना और सोचना पड़ेगा। बट हाँ, द बात तो हम उस बात की कर रहे थे कि क्या किया आज मैंने। तो आई वोक अप एंड देन आई डिबेटेड ऑल दिस थिंग्स, एंड during that point in time I thought I've realized things, but I need to, while speaking it again, I'm again getting agitated about certain things. So I need to sit with myself and do some more work on this, right? So yeah, I start questioning if I'm doing the right thing or not. But yeah, after that I went for a class, and then I went to library में I sat from 2 to 7, of which I think 3 to 3.5 hours were productive. The last 1.5 hours was just not productive. I was hungry as fuck and I couldn't concentrate. Every time I would watch 5 to 10 seconds of a video and I forget what he told, and then I had to, you know, rewind it to see what was happening. So yeah, that was it. And except that, I'm again and again getting lost in some thought chains, let's say thought loops. So after that, I'd gone out with my friends to eat, and that's where most of my time went. And we came back by then 30 and 35. Till 11 I was in my room, and from 11 to 11:30 or 12. Right now it's 12:44. I was at my room. I was using WhatsApp and getting, replying to texts, and just lying on my bed. I went to wash my hands and legs, feet. Yeah, but the things that I do, oh fuck, why I'm getting this out? I'm just using it as a dump. Although one of the main purposes of me doing this is to improve the way I speak and my enunciation, pronunciation, explanation, so that I can speak well. But what did I learn today? I learned about stacks and greatest and smallest element, and the histogram. The most area in a histogram, most rectangular area in a histogram. So questions like that, because I've started covering DSA topics.